Okay, so now we have derivation of equation of motion by graphical method. Graphical method. Graphical method. Right? Now what you do in this? There is this is y-axis, this is x-axis, right? And if an object is moving with velocity u, initial velocity is u and goes to final velocity v, right? Like this. Like this. This is 90 degree in time t. Time x एक्सिस पे टाइम को लेते हैं in seconds और here we are taking y एक्सिस पे v को लेते हैं velocity, right? So this is t time and this is u, and this total is v and this is u, so this remains v minus u, right? Now this is the angle of inclination theta, right? In VT graph, slope in VT graph, slope represents acceleration, right? So m is equal to a is equal to tan theta, that is perpendicular upon base. So इसको हटा दो, a is equal to perpendicular is v minus u upon t and v minus u, and base is this t. So we can write at is equal to v minus u, or we can write v is equal to u plus at. This is first equation of motion. First equation of motion, right? V is equal to u plus at. Now we have second equation of motion. Displacement S is equal to area under the graph.
under the graph, right? So it is S is equal to area rectangle plus area triangle. So it is U into T plus half V minus U into T. V minus U into T, right? So we get S is equal to UT प्लस हाफ, और यहाँ पे अगर तुम इसको वापस लिख लो तो ये हो जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू 80. तो V इज इक्वल टू U प्लस 80, राइट. यहाँ पे V की जगह हम लिखेंगे U प्लस V इज इक्वल टू U प्लस 80. तो U प्लस 80 माइनस U इंटू T, प्लस माइनस U cancel out, this is multiplied, so S is equal to UT plus half 80 square, right? This is what? This is second equation of motion. Second equation of motion. Right? उसके बाद इतना हो गया. First equation of motion, second equation of motion. Now we have third equation of motion के लिए हम क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखी है ना, V is equal to U इसको सॉरी V माइनस U इज इक्वल टू 80 ना, तो T इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A. T की जगह ये चलेगा, राइट. नाउ वी हैव displacement S is equal to area trapezium is equal to 1 by 2 sum of parallel sides into height. So that is S is equal to, parallel sides are V and U, so ये हो गया V 1 by 2 V plus U, हाइट इज T, दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो T है, तो इंटू T. तो यहाँ पे लिख सकते, और T की वैल्यू क्या है? दिस इज, so 1 by 2 V plus U
plus u into v minus u upon a, राइट। तो ये हो गया s इज इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन 2a। सो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसको आप कह सकते हो कि v स्क्वायर प्लस गोज ऑन अदर साइड u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन of motion. You get this? Huh? This is how we derive the equation of motions by graphical method. ठीक है?